when I wanted to get admission in MBBS, unlike any pre-medical student, सबको ना MBBS का बहुत शौक होता है. But unfortunately, वो merit इतना बना ही नहीं. So I was like, I'm gonna apply next year again. I'm gonna study. 6 महीने गुजरे. I just got really bored. तो I just searched on the internet कि कहाँ admission खुले हैं because I just wanted to get enrolled. Now biosciences, biotechnology are the fields जो प्री मेडिकल वाला बड़ी आराम से चूज़ कर सकता है. उस टाइम ना थोड़ा सा क्रेज़ भी होता है. You wanted to do something in medical. So I just searched. I had two options, Ziauddin and Zabist. Now my brother was a graduate from here. It was closer to my house and also slightly on the economical end as well because universities are damn expensive. So bus this is how I got in, and I didn't want to do a very basic degree, so I went for like a biotechnology, which sounds fancier and is a more specified field. Getting enrolled in a professional biosciences, biotechnology, a life sciences degree, you expect to learn a lot about the living organisms. And then there's another thing that university offers you, that is, you get to know a lot more about humans. तो मुझे लगता है कि एकेडमिक डेवलपमेंट तो हुई साथ में जो पर्सनल डेवलपमेंट हुई. फॉर एग्जांपल, you participate in any of the societies, you participate in student council and even ZAB FM. I was one of the founding students that worked on ZAB FM Digital. तो लोगों से मिलना, interact करना, networking करना, and then you find contacts in them, you build long-term relationships that not only help you foster your, circle or just some interaction, it also gives you opportunities to connect on LinkedIn and even broaden your circle. Secondly, हमारी ना 2 field trips हुई थी. I remember, and one of the most impactful one was when we went to a live wastewater treatment plant that is in Surti industry. So I'm actually very grateful for the teacher because जो लाइव लर्निंग होती है ना, चाहे फिर वो आपकी लेबॉर्ट्री में हो या तो फिर आपकी जो है वो किसी और जगह पे जाके हो, आई थिंक दैट वाज द बेस्ट पार्ट. एक्सपोजर मिला, and then again you learn how to adapt yourself in different circumstances. However, what I'm working is not related to biotechnology, but I'm very happy with what I'm doing. Oh, my life at Zavist was amazing. I mean, I couldn't have asked for a better university experience. यहाँ पे दोस्तियाँ बनी भी, and then you have of course arguments in your friendships, everything happens, but you get to learn कि how a society generally functions. वो कहते हैं ना, यूनिवर्सिटी में आओगे तो पता लगेगा, तो वाकई पता लगता है. I enjoyed every event. मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी. I was part of academic things, I was part of the societies, I was part of the council. I went to every concert, every kawali, not every beach party, but लेकिन एक दफ़ा तो I did go there. So it was all fun. Late night सोना, फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठना, and then going to your freelance jobs or if somebody is tutoring or anything of that sort, and then managing your family and academic work, study, social life balance. So I think that was great. I think Zabis has a lot to offer. वो डिपेंड करता है कि कौन इन अपॉर्चुनिटीज़ को लेना चाहे. देयर पीपल हु जस्ट कम टू यूनिवर्सिटी देन जस्ट गो बैक, बट आई थिंक इट्स ग्रेट टू एक्सप्लोर बिकॉज कोई भी यूनिवर्सिटी कह ले, मेरा तो एक्सपीरियंस सिर्फ ज़ैबिस में ही है, बट आई थिंक इट्स गोना टीच यू सम वैल्यूएबल लाइफ लेसन्स एंड यू गोना हैव फन. सो दिस डिग्री इज़ अमेजिंग. जिसको इंटरेस्ट है दे आर गोना टेक द एडमिशन. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द फैकल्टी जो आपको पढ़ा रहा है ना, आई थिंक दे मेक और ब्रेक योर इंटरेस्ट. फर्दर डेवलप करने में आपके टीचर्स का बहुत बड़ा रोल होता है. फॉर्चुनेटली वी हैव एन अमेजिंग फैकल्टी जो आपको हर स्टेप पे सपोर्ट करेंगी. आई मीन देयर विल बी इंस्टेंसेस वेयर यू विल नॉट बी हैप्पी विद योर मार्क्स. आई मीन दैट्स व्हाट मेक्स अ स्टूडेंट, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट प्लेस टू एक्चुअली स्टार्ट योर इंटरेस्ट इन बायोटेक्नोलॉजी. आप बैचलर्स यहाँ से करें बिकॉज इट नॉट ओनली गिव्स यू ऑल दी एकेडमिक लर्निंग्स बट द कैंपस लाइफ इन इटसेल्फ. कहने को तो कैंपस छोटा है, बट इट्स सो हैपनिंग that you're definitely going to love it. The only thing is sometimes students do face a problem कि यहाँ पे शायद हर वो equipment ना मौजूद हो, but whatever is there it's state of the art technology, जो भी है updated है, progressive है, and cooperation है teachers का. So the person who's teaching you, I think they matter the most, and then because of your teachers you can get into other places as well.
So I would recommend them, not particularly for biotechnology, but for all the other extracurricular things that Zappist has to offer.